के बाद बाहर की तरफ निकली, थोड़ी सी कोई रन नहीं निकला बल्ले से, गेंद निकली विकेट कीपर के पास। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर अच्छी करते हुए। अनुभव बहुत है, ढेर सारा क्रिकेट खेल चुके हैं और इस साल तो बहुत सारे विकेट भी चटका चुका है ये खिलाड़ी प्रजेश। यॉर्कर लेंग की गेंद इस बार खुद कर निकाली हुई गेंद पॉइंट और गली के बीच में से खेलना चाहा डीप में, जब तक खिलाड़ी उसको फील्ड करते। सिंगल के साथ अपना खाता खोला, अपनी टीम की रन संख्या को यहाँ पर शुरुआत करी है जयंत ने। रुपेश गांव जो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज मिड विकेट के ऊपर से एक बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। स्क्वायर लेग के ऊपर हुक का एक लाजवाब स्ट्रोक भी इनके पास मौजूद है। पॉइंट के ऊपर से भी शॉट लगाना जानते हैं, छलांग लगाकर अपर कट भी लगाना जानता है ये खिलाड़ी। यही स्ट्राइक पर सामना करेंगे, यह आमना सामना देखने में बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि रुपेश गांवकर स्ट्राइक पर जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करता है और गेंदबाज है उनके सामने, दोनों धुरंधर आमने सामने। पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहे हैं नरेश, और अच्छी गेंद जमीन के सहारे विद अलॉन्ग द कारपेट के साथ सिंगल के साथ अपने खाते की शुरुआत कर चुके हैं रुपेश गांवकर। 2 रन 3 गेंदों का खेल अब तक समाप्त होता हुआ 2 रन निकले। दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ अपना अपना खाता खोल चुके हैं और ये क्रिकेट का माहौल बनाया है इस मैदान पर। हरा भरा मैदान, सुबह के सत्र में थोड़ा सा आउटफील्ड धीमा रहेगा क्योंकि रात का ओस का थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती जाएगी वैसे वैसे इस मैदान के ऊपर रन बनते देर नहीं लगेगी। और इस बार उठाकर खेला है खिलाड़ी, वहां पर तैनात, सीधे उसके हाथ में पहले विकेट का पतन। खिलाड़ी के दूर रखने की कोशिश, बगल से खेलना चाह रहे थे लेकिन सीधा खिलाड़ी को ढूंढ लिया, पहले विकेट का पतन। थैंक यू। एक ठोस शुरुआत के लिए भेजा गया था लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को रुपेश के साथ, वो ठोस शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पहले 3 गेंदों में मात्र 2 सिंगल निकले थे। एक बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, गैप ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन फील्डर की काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर अपने दाहिने तरफ जाते हुए गेंद को पकड़ा और मुन्ना को चलता कर दिया वापस खेमे के ओर। न्यू बैटर मैदान पर 1 डाउन के हैसियत से मैदान पर दाखिल हो चुके हैं। विकी की अगली गेंद का सामना करेंगे। ओ अच्छी गेंद, यहाँ पर थोड़ा सा आमंत्रित कर दिया था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, खुशकिस्मत रहे इस बार विकेट कीपर के हाथ में नहीं निकली। 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल खाते में और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर मैदान पर अभी भी आ चुके राजेश, एक और राजेश उनके खेमे में मौजूद है, मिस्टर सिक्सर जिन्हें कहा जाता है राजेश वाइंगनकर साई गणेश के खेमे में मौजूद है, लेकिन उससे पहले इस जोड़ी को एक अच्छी साझेदारी अपनी टीम को निभानी पड़ेगी। और इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद खेलना चाहते थे, हालांकि की परिस्थिति निश्चित रूप से रनआउट का भी खतरा हो सकता था और थ्रो भी हो सकता था, लेकिन कवर बैकअप विकी ने प्रयास अच्छा किया था। शायद पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साई गणेश की टीम अमेजिंग असोलना के खिलाफ खेलते हुए अपने प्रारंभिक मुकाबले के दौरान। चालू नहीं है क्या? चालू है, असा म्हणता मरतो। हेलो कौन है? अमेजिंग असोला की अगर बात की जाए, यही खिलाड़ी घुमटेश्वर मरगांव के टीम में भी खेलते हुए आपको दिखाई देंगे।
नरेश आसोल्डेकर के छत्र छाया में ये युवा खिलाड़ियों की फौज जो कि मैदान में उतरी हुई आपको दिखाई देगी। इस साल गणपति वॉरियर्स के प्रतियोगिता में रनर अप रहे श्री बोडगेश्वर चैंपियन ट्रॉफी बोडगेश्वर ट्रॉफी में ये रनर अप रही है ये टीम मरगांव की। और आज इस मैदान के ऊपर अपना नसीब आजमाते हुए अपना जलवा दिखाने के लिए गेंदबाजी में अब आते हुए लीजेंड खिलाड़ी नरेश आसोल्डेकर। रोड एंड की तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे रुपेश गांवकर। कई बार एक ही टीम से रुपेश गांवकर खेलते हुए नजर आए हैं नरेश आसोल्डेकर के साथ। आज आमना सामना है। साई गणेश ने रुपेश गांवकर को निमंत्रित किया है। सामना करेंगे नरेश आसोल्डेकर के पहली गेंद का। पहले ओवर में निकले 4 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता। फुल टॉस गेंद इस बार उठा कर खेला है लेकिन एक तगड़ा स्ट्रोक गेंद निकल रही है मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। पहली गेंद के ऊपर एक शानदार स्ट्रोक रुपेश के बल्ले से देखने को मिला। इस बार हल्के हाथों स्टीयर के पॉइंट और गली की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ चोर बदला और ये अच्छी निशानी है बल्लेबाज की। जिस तरह से फुल टॉस गेंद पर एक बड़ा शॉट निकला उसके बाद सिंगल लेकर दूसरे चोर के ऊपर निकले अपने साथी को यहां पर बल्लेबाजी का मौका दिया है। टोटल की अगर बात की जाए 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नरेश गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार सामना करेंगे राजेश। अच्छी गेंद कट कर निकाले ऑफ साइड की दिशा में। शॉट में खिलाड़ी तैनात जरूर थे लेकिन उससे काफी तेज से निकले रुपेश गांवकर। 1 रन चिकी सिंगल जिसे कहा जाता है उस सिंगल के साथ फिर एक बार स्ट्राइक पर आए हैं। टोटल पहुंचा 12 रन। अब तक इस ओवर की बात की जाए तो 3 गेंदों में अब तक 8 रन खर्च कर चुके नरेश आसोल्डेकर। अच्छा पहला ओवर रहा। दूसरे ओवर में एक छक्का लगा लेकिन उसके बाद कमबैक करना चाह रहे हैं। लोअर फुल टॉस हाफ वॉली बनाकर खेला। रनआउट का खतरा हो सकता है। बार बार विकी के पास वहां पर शायद वहां पर खिलाड़ी जो कि तैनात है उनके पास गेंद जाने की कोशिश कर रही है। कोई एक सिंगल निकला। सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट गंवाने के बाद। छोटी गेंद फिर एक बार उसी दिशा में देखिए गेंद लगभग ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश जिसके चलते हुए बल्लेबाज को कोई मौका नहीं बड़े शॉट लगाने का। पहली गेंद थोड़ी सी खराब फेंकी गई थी तब बाजुएं खोलने का बहुत बाजुएं खोलनी थी। थोड़ा सा बॉडी को गर्म करना था जिसके चलते पहली गेंद थोड़ी सी हाथ से फिसली और उसके ऊपर एक बड़ा शॉट निकला। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह की गेंदबाजी करी है नरेश ने। फिर एक बार इस बार खेल दिया जमीन के सारे सिंगल निकलेगा। आएंगे यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी 1 रन मात्र निकलता हुआ। मेंडिस थे वहां पर खिलाड़ी। 1 रन के साथ साथ 2 ओवरों का खेल समाप्त। 15 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर में निकले 11 रन। गेंदबाजी में पहला बदलाव और एक होनहार खिलाड़ी ढेर सारा अनुभव टेनिस बॉल क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते आमिर गढ़ीकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। तीसरा ओवर डालने के लिए पहले 2 ओवर में 15 रन निकले। जिस तरह से एक बड़ा शॉट निकला है थोड़ा सा स्कोर में तेजी लाने की कोशिश कर रहे रुपेश गांवकर। पहला ओवर अच्छा निकला। दूसरे ओवर में निकले 11 रन। 15 रन 2 ओवरों का खेल समाप्त 1 विकेट के नुकसान पर। और पहली बल्लेबाजी कर रहे साई गणेश की टीम और बॉलिंग पावर प्ले का इशारा जो कि आता हुआ। ये ओवर आमिर का काफी महत्वपूर्ण पावर प्ले का इशारा यानी कि 2 खिलाड़ी मात्र 30 यार्ड घेरे के बाहर रख सकते हैं आप।
चाहे बैटिंग पावर प्ले हो या बॉलिंग पावर प्ले। इस बार खोद कर निकाली, गेंदबाज के सर के ऊपर से गैप में से जा रही थी गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ कवर पर जब तक फील्ड की जाती, पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। देखते देखते दूसरा रन भी यहां पर पूरा कर दिया। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रुपेश जानते हैं कहां से गियर चेंज करना है, कहा किस गेंदबाज को टारगेट करना है, किस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना है। पहला ही मुकाबला सुबह के सत्र का, और हल्की हल्की अब धूप खिल रही है, हल्की हल्की गर्मी भी महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा ठोस विकेट नजर आ रहा है। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को काफी फायदा हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर रन 80 के आसपास का टोटल खड़ा करना पड़ेगा। ओ इस बार तगड़ा स्ट्रोक, ताकत भरा स्ट्रोक सीधा निकला 6 रन के लिए। इनिंग का दूसरा छक्का रुपेश के बल्ले से निकलता हुआ। दूसरा छक्का रुपेश के बल्ले से निकला है 6 रनों के लिए। सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ, थोड़ी सी ओवर पिच डिलीवरी थी और एक तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला। भाई दूसरे ओवर में एक शॉट लगा था और तीसरे ओवर में एक शॉट लगा है। छक्के के साथ टोटल 24, माफ कीजिए 23, और इस वाइड के साथ अब पहुंचा 24 पर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्कोर ने थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, देखना है क्या कितने रनों तक पहुंचता है साई गणेश की टीम का टोटल। फिर एक बार भटकी हुई दिशा इन गेंदबाजी, लगातार दूसरी गेंद वाइड, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 25 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट अब थोड़ा सा गेंदबाजी में आ रहे हैं आमिर गडेकर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ इस बार खेल दिया, हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात। जैसे ही अपना साइड चेंज कर दिया, थोड़ा सा गेंद का एंगल भी चेंज हो गया और जहां पर खिलाड़ी लगभग कवर पर तैनात थे सीधे उसके हाथ में और 1 विकेट का पतन। प्रारंभिक जोड़ी अब मात्र वापस लौट चुके हैं। 2 छक्कों की पारी आखिरकार रुपेश की यहां पर समाप्त होती हुई। थैंक यू। साथ साथ और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्हें अभी अभी एक किताब मिला एमजीपी ट्रॉफी में, गोवा के सबसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से इनका नॉमिनेशन हो चुका था और उनको चुना गया। साहिल वाइंगनकर यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी टीम का अगला मुकाबला हो जाएगा गोवा पुलिस टीम के साथ। तो इससे पहले ले चलते फिर एक बार मैदान पर। अब मैदान पर रुपेश की जगह लेने के लिए आ चुके अमृत वेरलेकर, ठाकुर के नाम से जाना जाने वाला ये खिलाड़ी, गोवा राज्य का एक होनहार खिलाड़ी, आजकल गेंदबाजी भी करते हैं अमृत वेरलेकर। ओ अच्छी गेंद, तेज गेंद, यहाँ पर जैसे रुपेश आउट हो गए फिर एक बार ओवर द राउंड विकेट आए हैं जो कि आमिर गडेकर लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी, कटर गेंदबाजी करते हैं, बीच बीच में तेज यॉर्कर इनकी स्पेशलिटी है। ओ हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे और सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचा 26, 2 विकेट के नुकसान पर 19 रनों के एक पारी खेली रुपेश गांवकर रहे, 2 छक्कों की बदौलत। अभी भी तीसरा और प्रगति पर है। बात की जाए तो 26 रन बन चुके हैं। स्कोर में तेजी जरूर पकड़ी है लेकिन 2 विकेट भी जल्दी निकले हैं, यानी कि दोनों टीमें अब तक तीसरे ओवर तक संतुलन बनाए रखे हैं। 2 विकेट अमेजिंग ने निकाले हैं और 26 रन अब तक बनाए हैं साई गणेश ने, यानी कि दोनों टीमें अच्छा मुकाबला खेलती हुई नजर आ रही है। वन साइड नहीं हो रहा है अब तक का मुकाबला।
और अच्छी गेंद राजेश के लिए आपाली बना कर खेल दिया। थोड़े से रुके थे रन लेते वक्त, हाना के परते थे, और थ्रो हो चुका है और थोड़ी सी सुस्तीली फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर। जैसे जहां पर सिंगल निकल चुका था वहां पर ओवर थ्रो के रूप में और एक सिंगल, कुल 2 रन निकले। अब ओवर समाप्त, तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त, 28 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर गुरुशांत आपको नजर आएंगे, मेंडिस के नाम से जाने जाते हैं और अच्छी गेंदबाजी के लिए ढेर सारा अनुभव इनके पास भी मौजूद है। गुमटेश्वर मरगांव के ओर से ढेर सारे मुकाबले खेल चुके हैं, काफी विश्वास है नरेश का इनके ऊपर और इसलिए गेंदबाजी का मोर्चा उनके पास दिया गया है। चौथा ओवर प्रगति पर, 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर बना पाई है साई गणेश की टीम। गुरशंत उर्फ मेंडिस, अच्छी गेंद यॉर्कर लेग की गेंद ऑफ वाली बना कर खेल दिया विदलांग द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल का एक अच्छा स्ट्रोक देखने के मिला। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर पॉइंट से आकर गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी टॉस हारने के बाद कर रही है साई गणेश की टीम अमेजिंग असोला के खिलाफ इस मैदान पर। औचित्य यहाँ पर उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर, दूसरा दिन और पहला मुकाबला। एक अच्छा माहौल, अच्छा क्रिकेट के लिए जिस तरह से वातावरण, उस वातावरण के साथ इस मैदान पर मानो एक एकादे इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला चल रहा हो। और इस बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, पीछा करना चाहा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, बल्लेबाज आते आते बहुत देर हो चुकी थी, गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ये जानते हैं मेंडिस कि बल्लेबाजों के शरीर के पास गेंदबाजी करेंगे तो बड़े शॉट के लिए जरूर जाएंगे, इसलिए दूर फेंक रहे हैं डॉट गेंदे। ये गेंद देखिए फिर एक बार ऑफ स्टंप के ऊपर थी, हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी आपको नजर आते और एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, एक अभी भी पावर प्ले मौजूद, बैटिंग पावर प्ले होगा, वो निश्चित रूप से मिस्टर सिक्सर आना अभी भी बाकी, उससे पहले ये साझेदारी महत्वपूर्ण, अमृत वेर लेकर के बल्लेबाजी महत्वपूर्ण है साई गणेश के लिए। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप करना चाह रहे थे, थोड़ा सा टांस भी बदला था लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि टाइम नहीं कर पाए, आते आते गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गुरुशंत मेंडिस द्वारा अब तक की अगर इन गेंदों का बात की जाए तो। चौथा ओवर प्रगति पर, 30 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में खेल बैठे, शायद यहां पर आउट हो जाएंगे, देखने वाली बात होगी, कैच यहां पर लपक लिया है, देखता है क्या अंपायर का फैसला आ जाता है। फिलहाल तो और जी हाँ, ये आउट का फैसला, यानी कि कैरी की या नहीं, ये पूरी से जांचने के बाद यहां पर अंपायर की सहमत है। अमृत वेर लेकर वापस, बड़ा आघात, बड़ी विकेट, वापस निकल रहे हैं 30 रन पर, ये तीसरी सफलता।
नए बल्लेबाज जो मैदान पर रजत आते हुए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे गुरुचंद की गेंदबाजी का। अगला मुकाबला खेला जाएगा गोवा पुलिस वर्सेस आरव टाइगर्स। दोनों टीमों के कप्तान कृपया रिपोर्ट करें। गोवा पुलिस और आरव टाइगर्स। मेंडिस गेंदबाजी के मोर्चे पर। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जोर निकलेगा, तेजी के साथ आ गए, रनआउट का खतरा हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट यहां पर हो जाते। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही तेज थ्रो, जिस एक्शन में पकड़ा सीधा उसे एक्शन में इस यहां पर थ्रो कर दिया। ओवर लगभग समाप्त होता हुआ ये यहां पर चौथा 4 ओवरों का खेल 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन स्कोरबोर्ड पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए साई गणेश की टीम इस मैदान पर। चलिए फिर एक बार आमंत्रित करते हैं गोवा पुलिस और आरव टाइगर्स, आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। गोवा पुलिस और आरव टाइगर्स दूसरा मुकाबला 4 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त, 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ यहां पर ले चलते हैं। आज के सुबह के इस पहले मुकाबले के दौरान पहली बार आवाज सुनेंगे हरीश काकोड़कर सर की। धन्यवाद। So good morning, everyone. Hello, Tess. So just wanted to play that shot in the backward square leg region. 4 overs, 31 for 3. We have seen a great turnaround in the matches that we witnessed in yesterday's encounter. Well, the quarterfinals was a really great turnaround. In 5 overs, they were reeling at around 28 for 7. And suddenly there was a spark in that last 2 overs. So once again, time nicely, should get a boundary. Now fielded inside. Maybe the outfield is a little damp here. You can understand there is a lot of moisture content below the ground. So doesn't skid along, doesn't race across the turf. So the outfielders are always in the chance to stop the boundaries inside the line. Single to the total. That takes a score to 32. This is the commencement of the 5th over. Vicky already picked up 1 wicket. That was of Jayant at the start. And now he has been given the job to bowl this 5th over. This is nicely played. Oh, he didn't time it that well. There is a fielder, but he's just a middle spectator. The ball just lands inside the gazebo and is a maximum. Goa Police, तुम्ही माचे report करात. Goa Police is requested to report here. Goa Police captain and team, please report in the commentary box. Once again trying to heave this and maybe, yes, the wicketkeeper is asking maybe for a review or for the referral, but umpire says, well, he's well inside. And now, yes, the referral is there and they are taking that referral. So let's see, it might be close. The third umpire will be in action. But certainly it's a really quick stumping here from Mateen Khan. He was quick onto it to remove that bills out of the grooves. And the back leg was there. Maybe just umpire feels it was inside. But sometimes such decisions are so close. It is only up to the third umpire now with the slow-mo. Let's see.
So not out is the signal. He didn't remove his leg on top. It was almost grounded fully. So that's the reason. But a good chance taken here. A quick stumping from behind the wickets by Mateen. So now it will also make the batsman aware that you should not leave your crease. Once you leave your crease, it's like leaving your home. And once you leave your home, it's difficult to come back. So there is only one chance. Staying back inside the popping crease. And that's the best thing that Rajesh has done over there. 38 on the board. So already we have seen 1-6. The humongous strike from this man Rajesh is known for the big strikes coming all the way from Bali here in Sodiem for the All India level tournament. This time wide, little bit outside. Vicky is a very good, fantastic all-rounder, but they should be careful. They cannot allow this strong batting order to take the match away from them. Sai Ganesh are a good bunch of teams were combined well here. Some of the all-rounders, some of the good bowlers, and the batsmen from all across Goa. Once again, yeah, he was hoping. He was just hoping, but umpire did not reciprocate that feeling to him. And just going to be a dot ball. Left all alone. Sometimes Vicky bowls that off cutter. So if that off cutter falls just outside, the batsman feels it might be going outside that guideline, but sometimes it just comes back. He's a very, very smart cricketer, Vicky. Once again, this time no connection. Trying to pull that in the mid-wicket region. Should get only a single. From the deep, the throw comes, and that single will finish over number 5. Is 40 for 3. This is the second call going to Goa Police. This is the second call going to Goa Police. Goa Police, please come fast immediately and report in the commentary box. So match is even Stevens at the moment. 5 overs gone. It's 40 for the loss of last 3 overs. We will definitely see 4th and 5th bowler in these last 3 overs. The top 3 bowlers normally bowl out in the 5 or 6 overs, and that is where an opportunity is there for the batting side to take the advantage and get some sixes. Somewhere around 75-80 we have seen it's very difficult to get towards the target in the second innings, especially when the sun is hiding behind the clouds. It makes even more difficult because the ball is not going to fly across for the sixes. So batting power play has been chosen, and it's going to be Mendes to start from the roadside end. This is the first match of the second day. We already seen 2 semi-finalists who entered yesterday. A cracking delivery, pace, sheer pace, and a perfect length. Yeah, take that, he says. Hit that. Absolutely no chance. Perfect length, a perfect yorker. This is Mendes. He's got a pace, but I've seen nowadays in just a few tournaments that has gone by in this season. It's just been little costly. Maybe that line and length was little awry at that time. Not here. This time, just getting a single in the covers region. So Mendes bowls in a decent area here, starts off very well in these batting power play overs, and the batters will be certainly aware that they need to get a little move on here. They need to get somewhere around 15 runs, 12, 15 maybe in this over in the batting power play over.
Mendes is not an easy customer, and these teams, most of the team players of this amazing Assolana, they play with each other in most of the tournaments, so they gel well with each other. That's a big hoik. That's a big hoik, and it goes above the head of Vicky. He just saw it, and the ball just went like an aeroplane over his head and landing outside for a 6 runs. He went for the switch hit, but that's a very good line. Hardly you can get any shot for that. If you can get 80% or 70% of the deliveries in that area, most of the times batsmen struggle to get runs up for that particular ball. The previous ball was right in this slot, and he just slugs it for 6 runs. Comes back strongly here, Mendes. Once again, this is a good line. They might be thinking of the second here. Yeah, thought for a while, but then they come back and just gets the single. So the single takes the score to 48. 8 runs have come off the first 5 balls so far. A 6 in this over. I think 8 runs, Mendes will be okay with that. 8-9 runs, considering this is going to be the batting power play over. 1-6 is for any bowler in a big tournament like this, when big batters are going to be batting, is not a bad ask for the captain. Once again, this might be an outside edge. Oh, it's cold. Almost slipped through there. He was up to the mark. Mayur Borkar there. And that single will finish that over number 6. And it's 49 for 3. Ashish, you are please requested. Ashish Matsanga, your commentary box on. Or anyone, Shailesh, Nazale Koni Asa, Zale Matsu commentary box. Goa Police is waiting for you. And this goes above his head. So now Rajesh has decided it's time to go for the juggernaut, and he goes for the kill against the bowler Amir Ganesh, and the 6 of the very first ball. Dot ball, the second ball. So Amir Ganesh, left arm medium pacer who can get the ball with those little leg spinners. The keeper is also standing in front, not allowing the batters to use the crease or go down the track. Mateen is a fine keeper. I have seen him keeping and taking some stunning catches and also some wonderful stumping. Keeper has a very good job in hands. A keeper is the most important position in cricket, and especially more so for the spinners or medium pacers who can cut the ball. They don't have that much of pace, but they can certainly move the ball both the sides, both the ways. This was once again maybe in this slot. He went for the hit. And appealing here, thinking of a run out, and they might be getting the second. Maybe there was a chance, maybe that was close. That's why the umpire is going towards the third umpire referee here.
So batsman is in. He dragged the bat well in, stretched his arms. That's the reason why he was inside that crease. So 2 runs taken here by the batter. But a good fielding nevertheless at that region, direct hit. And keeper also could not do much as the ball ricocheted going towards that covers region area. Once again goes for that shot. Oh, this time absolutely no chance. He was trying to use the depth of the crease. He was almost behind the wickets when playing the shot. We have seen yesterday Suryakumar Yadav how difficult shots are, how innovative, creative shots he played. We had not seen such shots being played in leather ball cricket in the yester era. And this time also it might be, oh, that was, could have been a suicide here if they had run. It was close to Mateen and he finishes off well, Amir Gadekar, with that Yorker. 2 dot balls to finish that over. Once again, 9 runs coming off this over. At the end of a 7 is 58 for 3. So in comes Mayur Borkar. Surprising, Mohit is there and Mohit is not bowling his leg spinners. Leg spinners have done wonders here in this tournament the first day. And maybe Mohit feels that medium pacers are a better option here. Or maybe the captain feels that I've still got the options, I can use it in the next match. But these are knockout matches, so you have to choose the best possible options available for you. Sometimes that runs also in the captain's mind. Mohit generally bowls very well, but maybe the captain feels Mayur is there in the side who can bowl the medium paces. This might be certainly suiting medium paces more than the spinners. 58 on the board in 7 overs. In comes the last over. Can they get past 70? Which might be a decent total. It's not a winning total, but a decent total where if you pick early wickets can work in your side, in your favor. That was what kind of ball that was. I've seen him bowling 2 full toss ball in just recently held Kurcharem Champions Trophy above the waist height where he was stopped bowling that over. Once again this was short wide. And that time he bowled 2 beamers and the umpire stopped him. Maybe it happens sometimes where you don't warm yourself up before the start of the match and the first 2 balls not landing in the right areas. Now the left-hander comes on strike, Rajat. And a slight change in the field as the man in the deep on the leg side comes inside, which is an offside for the left-hander. 60, the score moves on to. Still 5 balls left. Goes for the big heave. Not much connection here. Naresh Assolana comes quickly from that boundary. Well, look at him. He is almost 46, 47 and he has been told to do his job at the boundary line, even though youngsters are there in this lineup. Still he can do a fine job. He keeps his fitness at the highest level, Naresh Assolana. Just gets a single, score moves on to 61. I don't know. He's looking at his legs. Maybe he's not feeling comfortable. I think nobody has struggled here as far as footing is concerned. The footing area is absolutely right. He's very strong, very hard. Maybe he's trying something different. Maybe he's trying the leg cutters. Maybe he's trying the off cutters. And maybe a little deflector or rain, a little drizzle at night might have made it slippery. We'll really come to know exactly from the umpire's perspective when the innings gets closed.
So again, this time, has he timed it well? There is a fielder underneath and he takes it easily. Very good catching here in the deep. And I think they should have gone for the sixes. They need sixes, they need big hits. He went, but shot by 2 meters. In comes Mr. Sixer, Rajesh Wangankar. The big player has been sent little leg, and number 6 behind his jersey is known as Mr. Sixer. So right number for his jersey. I don't know, this is the 3rd or 4th time Mayur has dragged that ball. Nobody has struggled so far in the first day or also in the first match in the second day. All the bowlers have bowled decently. I don't know, understand this. Maybe should have got a little warmed up before this match. Still keeping it tight, just wide says umpire. One more to the extra. So many wide bowled here in this over so far by Mayur. Doesn't seem to be of his own today, especially in this morning match. They cannot afford to be complacent. They cannot afford to be loose here. This time, I told you, they cannot afford to be complacent. He was not hitting the right target, but this is Mr. Sixer of Goa. He doesn't miss a chance to hit a 6. First 6 from the bat of Rajesh Wangankar. I don't know what to say. Maybe I'll have a word with him later on. This is going to be a wide ball. Now Mateen is definitely having a word with him, and rightly so. Maybe asking what is happening wrong over here. Or maybe he's trying to release the ball, just finish this over. '71. So far given 13 runs in this over so far, and bowled 4 wide balls that were too short as well. Could have been no if the ball had popped inside that popping crease. In fact, 5 wides. And Rajesh, it was in the slot. It was in the slot of Mr. Sixer. Just missed it. And still the score is on 71. And in comes the last ball of this first innings. This ball came so slow, very, very slow, and finally I think there will be a lot of relief on Naresh Chopdekar and Mateen Khan after seeing that over comes to an end. I think out of the 14 balls that he has bowled, 7 or 8 deliveries were short balls. He was lucky that he just went for 13 runs in this over. At the end of 8 overs, it's just 71, and 72 is the target set for amazing Assolana by Sai Ganesh.
हेलो, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हर एक टीम को। जो मैदान के बीच में जिन टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा है, हमारे दाएं और बाएं बाजू में जो डगआउट है वहाँ पर वो चालू मुकाबले के खिलाड़ी बैठेंगे। जो अगले मुकाबले के लिए खिलाड़ी तैयार है वो इस मुकाबले के बाद उस डगआउट में बैठ सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। नमस्कार सर्व क्रीडा रसिकांचं क्रिकेटच्या मैदानावरती हार्दिक स्वागत। उज्ज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपडेकर या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं सर्व क्रीडा रसिकांचं या क्रिकेटच्या मैदानावर हार्दिक हार्दिक स्वागत। आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना आपण पाहताय साई गणेश विरुद्ध अमेझिंग असोला या दोन संघादरम्यान। नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय होता अमेझिंग असोला संघाचा। प्रथम फलंदाजी करताना साई गणेश संघाने या ठिकाणी जमवल्या त्या 71 धावा, म्हणजे या मैदानाचं कॉमेंट्री बॉक्समधून प्रेडिक्शन 70-75 धावांचं त्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला गेला। साई गणेश संघाकडून 72 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय या ठिकाणी, ते म्हणजे अमेझिंग असोला संघासमोर। प्रति ओव्हर 9च्या धाव सरासरीनं धावा जमवाव्या लागतील अमेझिंग असोला संघाला हा सामना जिंकायचा असेल। नॉकआउट पद्धतीचे हा सामने आणि या नॉकआउट पद्धतीच्या सामन्यामध्ये एक हलकीशी चूक या ठिकाणी स्पर्धेतून बाहेर घेऊन जाताना आपण कालच्या दिवसामध्ये पाहिले आणि त्याच ठिकाणी आजच्या दिवसातील शेवटचं षटक पाहायचं झालंच तर या ठिकाणी मयूर बोरकरचं षटक, महागडं षटक, त्या षटकामध्ये 13 धावा खर्ची घातल्या गेल्या आणि त्याच्या जोरावरती या ठिकाणी 71 धावापर्यंत मजल मारली ती साई गणेश संघानं। अमृत वेर्लेकरची बॅट या सामन्यात चालली नाही, म्हणजे रुपेश गावकरने 19 धावा जमवल्या, राजेशने जमवल्या 22 धावा आणि मिस्टर सिक्सर राजेश वांगणकर याने एक षटकार ठोकला। रजतने जमवल्यात नॉट आउट 12 धावा आणि त्याच्याच जोरावर 70 पार अर्थात 71 धावापर्यंत मजल मारली ते अमेझिंग असोला संघाविरुद्ध साई गणेश संघानं। 72 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। प्रति षटकामागे 9च्या धावत सरासरीनं सलामीची जोडी मैदानामध्ये। मोहित आणि प्रजेश ही जोडगोळी मैदानामध्ये। मोहित नाईक आपल्याला स्ट्राईकला दिसतोय। नॉन स्ट्राईक एंडला प्रजेश उर्फ विकी, ज्या खेळाडूबद्दल आम्ही नेहमीच कौतुकाचे शब्द काढतो, म्हणजे ऑलराऊंडर खेळाडू गोवा राज्यातील एक नामांकित असा विकी या नावाने सुपरिचित असा नॉन स्ट्राईक एंडला दिसतोय। आणि गोलंदाजी मार्कवरती एक नामचीन गोलंदाज रोहन सालगावकर। मोठमोठ्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मोठमोठ्या फलंदाजांना बांधून ठेवणारी गोलंदाजी ज्याच्या कडून पाहायला मिळते तोच रोहन साळगावकर। मॅन फॉर अस्नोरा हा या ठिकाणी आपल्याला मात्र साई गणेश संघाकडून खेळताना दिसतोय। विकेटच्या पाठीमागे आपल्याला दिसेल राजेश वांगणकर। 72 धावा या ठिकाणी निश्चितपणे जमवायच्या। पंचांचा इशारा सामना सुरू झाल्याचा। पहिला चेंडू यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, एक सुरेख फटका, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका, एक धाव स्वतःचं खातं खोलतोय या ठिकाणी मोहित आणि धाव संख्येला सुरुवात होते। 72 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 1 या ठिकाणी पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाल्यानंतर। शॉर्ट चेंडू यावर मात्र पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने त्या ठिकाणी डीपला क्षेत्ररक्षक पाहतोय। फेक अतिशय सुरेख, सिंगल या ठिकाणी मिळते। दोन्ही फलंदाज आपापलं या सिंगलने खातं खोलतायत। 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि धावसंख्या बिनबाद 2, 72 धावांचा पाठलाग करताना या क्रिकेटच्या मैदानावर या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं दोन्ही संघ गोवा पोलीस आणि आरव टायगर्स दोन्ही संघ नाणेफेकीसाठी या।
जमनीलगतचा एक सुरेख फटका, परत एकदा त्याच दिशेने शॉट वरती क्षेत्ररक्षक सिंगल या ठिकाणी राजेश जोपर्यंत परती करेल. 3 पहिले चेंडूवरती 3 सिंगल. आरव टायगर्स आणि गोवा पोलीस दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधा. जर पेनल्टी तुम्हाला या ठिकाणी बसली तर नंतर कोणती आर्ग्युमेंट ऐकून घेतली जाणार नाहीये. एक यॉर्कर लिंक पद्धतीचा चेंडू शॉट वरती क्षेत्ररक्षक अडवण्याचा प्रयत्न, आणखी एक सिंगल. कारण या दोन्ही फलंदाजाला माहिती आहे रोहन साळगावकरचं षटक, रोहन साळगावकरच्या चेंडूवरती मोठ्या धावांसाठी जायचं नाही आहे. येणारे नंतर गोलंदाज असतील त्या गोलंदाजावर हल्ला चढवायचा आहे, मात्र तोपर्यंत सिंगल मात्र काढावी लागेल. यावेळी परत एकदा पहा कशा पद्धतीची फटकेबाजी, हलकेच ड्राईव्ह केले जात आहेत. जमिनीलगतचे फटके आणि सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते, ती म्हणजे 5 धावा. 5 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. निश्चितपणे एका जे मनामध्ये ठरवून आलंय ते डगआउट मधून मी त्या रोहन साळगावकरची षटकं खेळून काढायचे आणि पुढच्या या ठिकाणी गोलंदाजावरती हल्लाच. गोवा पोलीस आणि आरव टायगर नाणेफेकीसाठी यायचा. आरव टायगर कर्णधार. वाईटचा इशारा, अवांतरची धाव. आकाशाला हात समांतर, हा चेंडू असेल अवांतर. 1 धाव, एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ते 6 धावा. बिनबाद 6 अशी सुरुवात या सलामीच्या जोडीसाठी. अल्टी पाल्टीवाला स्ट्रोक. यावेळी मात्र पंचांकडे दाद मागितली जाते, मात्र चेंडू निर्धाव. बॅटला कोणताही स्पर्श होत नाहीये चेंडूचा. निर्धाव चेंडूने षटक समाप्त. पहिलं षटक या ठिकाणी 6 धावांचं रोहन साळगावकरचं समाप्त होतंय. एक चांगली गोलंदाजी या सामन्यादरम्यान पाहायला मिळते ती रोहन साळगावकर याच्याकडून. एक वाईट अवांतरची धाव निश्चितपणे टाकली, मात्र त्यानंतरचा चेंडू निर्धाव टाकत त्याची भरपाई या ठिकाणी केली गेली. आता मात्र पाहायचं आहे की या ठिकाणी ही सलामीला आलेली जोडगोळी कोणत्या गोलंदाजावरती तुटून पडते, कोणत्या गोलंदाजावरती अटॅक करेल. कारण 72 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि निश्चितपणे एखादा गोलंदाज तर तुम्हाला निवडावा लागेलच या मैदानावरती, ज्याच्या पाठीमागे तुम्हाला लागायचं आहे. मोठं धावांचं षटक या ठिकाणी वसूल करायचं आहे. मात्र पाहायचं आहे मोहित आणि विकी ही सलामीला आलेली जोडगोळी मैदानावरती काय करते. गोलंदाजीसाठी येतोय मॅन फ्रॉम कोरगाव. आरवी कोरगाव संघाकडून बऱ्याच सामन्यामध्ये जो हुकमी गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, मॅडी या नावाने सुपरिचित असलेला गोलंदाज महेश बाईडकर आपल्या कोट्यातील पहिलं आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतो. एक वेगवान तेज तर्रार गोलंदाज म्हणून त्याची ख्याती आणि मोठमोठ्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आरवी कोरगावच्या चॅम्पियनशिपमध्ये ज्याचा मोलाचा अर्थात सिंहाचा वाटा, तोच या ठिकाणी मॅडी गोलंदाजी मार्कवरती सामना करेल. मोहित स्ट्राईक एंडला. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 6 धावा, अजूनही 66 धावांची आवश्यकता. अल्टी पलटीवाला स्ट्रोक, रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा प्रयत्न, धावबादची संधी, मात्र थोडीशी संधी हुकते. फेक थोडीशी या ठिकाणी मी म्हणेन जर गोलंदाजाच्या हातामध्ये केली गेली असती तर अडचणीत सापडल्या असता या ठिकाणी विकी. निर्धाव चेंडूने षटकाची सुरुवात. एक अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी या ठिकाणी केली जाते ती महेश बाईडकर याच्याकडून. फलंदाजाला कोणतीही संधी देणार नाही हा इरादा या गोलंदाजाकडे आपल्याला पाहायला मिळतो प्रत्येक सामन्यात आणि त्याच ठिकाणी गोलंदाजीवरती परत एकदा महेश बाईडकर आपल्याला दिसतोय. यावेळी मात्र हलक्यात तटवलेला चेंडू, थोडासा उसळी घेण्याला चेंडू गुल्डिंग स्पॉट वरून थोडासा अनपेक्षित असा उसळतोय चेंडू, मात्र चेंडू मिडल करतो बॅटला. सिंगल बरोबर स्ट्राईक सोपवतो आपल्या संघ सहकारी विकी याच्याकडे. धावसंख्या सिंगल बरोबर पोहोचते ती 7 धावा. बिनबाद 72 धावांचा पाठलाग करताना आपल्या या सलामीच्या सामन्यामध्ये अमेझिंग असोला संघ या मैदानावरती. साई गणेश संघाडे प्रथम फलंदाजी करताना 71 धावा जमवल्यात आणि 72 धावांचा पाठलाग आम्ही सहजासहजी करू देणार नाही. टिचून गोलंदाजी करून अडचणीत आणणारी गोलंदाजी करू हा इरादा दिसतोय. यावेळी मात्र बॅक टू द बॉलरचा फटका, मात्र थोडासा लेग साईडच्या दिशेने असलेला फटका. 1 धाव आणि मिळेल विकीच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या जमा होते या ठिकाणी अमेझिंगच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या पोहोचते ती बिनबाद 8 धावा. एक थोडीशी शांत आणि सावध सुरुवात पाहायला मिळते अमेझिंग असोलना संघाकडे. यावेळी पुढे सरसावत खेळलेला फटका
मिड विकेटच्या दिशेने अमृत वेर्लेकर स्क्रीनवरती दिसतोय. परती तोपर्यंत करेल, केवळ मिळेल ती सिंगल आणि सिंगल बरोबर धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोहोचते ती 9 धावावरती. अजूनही प्रतीक्षा मोठ्या फटक्याची, चौकाराची प्रतीक्षा अजूनही समाप्त होत नाही आहे. षटकाराची प्रतीक्षा अजूनही समाप्त होत नाही आहे. यावरून या ठिकाणी प्रतिबिंबित होतंय की गोलंदाजी किती चांगल्या दर्जाची या मैदानावर पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. यावेळी मात्र अल्टी पलटीचा फटका परत एकदा फसला जातोय. पहिल्यांदा मोहित चकला होता, त्यानंतर चकतोय तो विकी. निर्धाव चेंडू मात्र समाप्त होतोय. काय गोलंदाजी या ठिकाणी महेश वाईडकरचे. कॉमेंट्री बॉक्स मधून माझं कौतुक केलं गेलं आणि त्या कौतुकाला साजेशी गोलंदाज मी मैदानावर करेन हा इरादा मैदानामध्ये घेत अतिशय अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी, एक किफायतशीर गोलंदाजी सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसते. परत एकदा यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू खोदून काढलेला फटका. रुपेश गावकरचं काय लाजवाब क्षेत्ररक्षण, काय लाजवाब झेल पकडलाय. हाफ चान्स होता मात्र त्या हाफ चान्सला कन्वर्ट केलं गेलं आणि विकी नाईकची खेळी अखेरकार संपुष्टात आले. आज हा सहज सोपा वाटणारा झेल थोडासा कठीण होता, मात्र जमिनीवरती लोळण घेत हा पहिला विकेट मात्र या ठिकाणी निश्चितपणे मिळवून दिला जातोय या झेलवरती. आता मात्र पहा या ठिकाणी तुम्हाला धावसंख्या बघायला मिळते ती 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि अवघ्या 9 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. न्यू बॅटर मैदानामध्ये जातोय. विकेट किपर बॅटर मतीन खान वन डाऊनच्या रूपात मैदानामध्ये. मतीन खानवरती पूर्ण मतदार, कारण हा विस्फोटक फलंदाज मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये ज्याने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर एक हाती विजय मिळवून दिले तोच या ठिकाणी वन डाऊनच्या रूपामध्ये. मात्र थोडेसे विपरीत परिस्थिती, कारण समोरचा संघ अतिशय धोकादायक पद्धतीने गोलंदाजी करताना दिसतोय. फलंदाजांना मोकळीक देत नाहीये फटकेबाजी करण्याची. पहिलं षटक टाकलं 6 धावांचं, ते म्हणजे या ठिकाणी रोहन साळगावकरने. दुसरं षटक टाकलं गेलं महेश वाईडकर उर्फ मेडी याने. अवघ्या 3 धावा दिल्यात आणि एक महत्वपूर्ण गडी बाद केलाय. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल आणि अमृत वेर्लेकर गोलंदाजी मार्गवरती पहिलं षटक आपलं टाकण्यासाठी. यावेळी आल्या आल्या एक मोठा फटका डिव्हिस स्क्वेअरलेगच्या दिशेने. चेंडू जातोय तो आउट ऑफ दी पार्क. घुटना टेक तमाशा देख असा फटका. 6 धावांसाठी अर्धा डझन धावा धावफलकावरती जमा. अमृत वेर्लेकरचं स्वागत षटकाराने. पुलटा चेंडू परत एकदा तसाच चेंडू तसाच फटका. यावेळी मात्र चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून बॅक टू बॅक सिक्सर. हे ते षटक ज्या षटकाची वाट पाहत होता तो म्हणजे मोहित, आणि अतिशय सुरेख असा फटका त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. धावसंख्येचा विचार केला, पहिल्या 2 षटकात धावसंख्येला ब्रेक लावला होता, मात्र ते ब्रेक या ठिकाणी काढून टाकले जात आहेत. 2 षटकाराने 21 धावांवरती एकूण धावसंख्या जाऊन ठेपते ती 72 धावांचा पाठलाग करताना. पुढचा चेंडू अलका स्टियर केलेला मुन्ना येतो चेंडूवरती. धावबाद करण्याची संधी, मात्र सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. एक सिंगल या ठिकाणी खेळली जाते. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र 22 वरती जाऊन टेपते. ती तिसरं षटक प्रगतीपथावरती, ज्या षटकाचा आम्ही मगासपासून उल्लेख करत होतो की फलंदाज एखाद्या गोलंदाजाच्या मागे लागतील आणि तेच हे षटक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्ट्राईक वरती आता मतीन खान.
यावेळी पहा एक मोठा फटका, मात्र फटका फसतोय चेंडूच्या खाली. क्षेत्ररक्षक जर थोडंसं फ्लाइटेड डिलेव्हरी, निश्चितपणे ताकद या फटक्यामध्ये नव्हती आणि क्षेत्ररक्षक मॅडीच्या हातामध्ये सहज सोपा झेल देत तंबूत दिशेने मात्र वाटचाल करताना दिसतोय. मतीन खान हा ठिकाणी बाद होतोय या मैदानावरती. गोल्डन डकचा शिकार होतोय. दुसरा आद्रे बसतोय अमेझिंग असोला संघाला. थँक्यू. न्यू बॅटर मैदानामध्ये जातोय तो मतींची जागा घेण्यासाठी. नवदीप MGP ट्रॉफी मध्ये ज्याच्या बॅट मधून धावा आपण बघितल्यात, अतिशय सुरेख फटकेबाजी नवदीपने केली होती ते MGPच्या मैदानावर, कुंडईच्या या मैदानावरती निश्चितपणे. यानंतरचा सामना आरव टायगर्स विरुद्ध गोवा पोलीस या दोन संघांदरम्यान होतोय. नाणेफेकीचा कौल जाता आरव टायगर्स संघाच्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला जातोय तो आरव टायगर्स संघाच्या वतीनं. लगेचच सामना सुरू होईल. या पहिल्या सेशन मधील दुसरा सामना असेल. अमृत वेर्लेकर या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क वरती सामना करेल नवदीप. दोन्ही युवा या मैदानावर. यावेळी मात्र जमदी लगतचा एक सुरेख फटका जो लेदर बॉल मध्ये अनेक वेळा खेळला जातो. कव्हरच्या दिशेने डीप मध्ये खेळाडू जोपर्यंत चेंडू अडवेल परती करेल. एक धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय आणि धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. 23 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 72 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 49 धावांची आवश्यकता असेल तो हा सामना जिंकण्यासाठी. आणि या षटकानंतर खेळ शिल्लक राहील तो 30 चेंडूंचा. उलटा चेंडू, रिव्हरचा फटका डीप थर्डमॅनच्या दिशेने. चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या बाहेर. पहिले 2 फटके षटकाराचे, त्यानंतरच्या चेंडूवरती निघतोय हा चौकार आणि या चौकारानं धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. ती म्हणजे तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 27 धावा धावफलकावरती. उरले 30 चेंडू आणि 30 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 45 धावांची अजून असेल आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये परत एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल तो मॅडी उर्फ महेश बाईडकर, ज्याने या अगोदरचं षटक, दुसरं षटक, आपलं पहिलं षटक अवघ्या 3 धावात 1 विकेट देत समाप्त केलं होतं. एक टिच्चून गोलंदाजी केली होती. त्याच्याकडे या ठिकाणी षटक या ठिकाणी दिलं जाईल. हे 4थं षटक असेल आणि बॉलिंग पॉवर प्लेचा इशारा पंचांचा आमच्या दिशेने येतोय. अर्थात 1 ते 4 या षटकापर्यंत तुम्हाला बॉलिंग पॉवर प्ले हा कंपल्सरी. 1 ते 3 पर्यंत तुम्ही जर षटक पॉवर प्लेचं घेतलं नाही तर त्यानंतर 4थं षटक हे पंच घोषित करतील पॉवर प्लेचं. त्यानंतर असेल बॅटिंग पॉवर प्ले 5 ते 8 षटकाच्या दरम्यान. आणि पाहायचंय तत्पूर्वी हे बॉलिंग पॉवर प्लेचं षटक आणि सामना करे स्ट्राईक एंडला नवदीप. यावेळी मात्र एक सुरेख चेंडू पंचाकडे झेलचीत अपील केलं जात आहे. पंच फक्त खातरजमा करतील या ठिकाणी कॅरी केलाय की नाही, मात्र पंच खातरजमा करतायत आणि नॉट आउट असल्याचा निर्वाळा मात्र या ठिकाणी दिला जातो. एक चांगला चेंडू स्विंग अँड मिस पद्धतीचा या ठिकाणी निश्चितपणे फलंदाज मोठा फटका खेळण्यासाठी जातोय नवदीप आणि ते पाहिल्यानंतर चेंडूची उंची थोडीशी कमी ठेवतोय. यावेळी परत एकदा तसाच चेंडू, यावेळी ऑफ स्टंपच्या जवळून टाकलेला चेंडू, सुरेख चेंडू, डॉट चेंडू, लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव. निश्चितपणे महेश बाईडकरचे एक टिचून मारा करणारी गोलंदाजी अपेक्षित असते ती संघाच्या कर्णधाराला, संघासाठी. आणि तीच या ठिकाणी गोलंदाजी रोहन साळगावकर नंतर महेश बाईडकर या दुसऱ्या षटकातही आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील निश्चितपणे करताना दिसतोय. नवदीप मात्र थोडासा चाच पडतोय मैदानावर फलंदाजी करताना. यावेळी मात्र हलके तटवतोय, सिंगल मिळेल आणि निश्चितपणे एक
मोठा फटका जेव्हा तुमच्या बॅट मधून निघत नसतो त्यावेळी एक सिंगल द्यायची आणि आपल्या संघ सहकार्याला फलंदाजी करण्याची संधी द्यायची, हाच इरादा असेल फलंदाज नवदीपचा. आणि त्याच दृष्टीने या ठिकाणी मोहित मात्र आता स्ट्राईक वरती येतोय. मोहितच्या बॅट मधून 2 षटकार 1 चौकार आपण पाहिलेत. संघासाठी मोहितने अनेक वेळा संकट मोचकाची भूमिका निभावली आणि तीच संकट मोचकाची भूमिका या ठिकाणी निभावली जाते या मैदानावरती. 72 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि आतापर्यंत या षटकात अवघी 1 धाव खर्ची घातली जाते महेश कडून. यावेळी मात्र खोदून काढलेला फटका सरळ क्षेत्ररक्षक रुपेशच्या हातामध्ये, कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, स्वीपर कव्हर वरती उपस्थित रुपेशच्या हातात झेल देऊन तंबूत परत एक मोठा आद्रा सेट फलंदाज या ठिकाणी बाद होऊन तंबूच्या दिशेने. थँक्यू. या ठिकाणी सर्व संघांसाठी सूचना असेल, ज्या संघाचा सामना मैदानात सुरू असणार आहे त्याच संघाचे खेळाडू दोन्ही बाजूच्या डगआउट मध्ये बसतील याची कृपया नोंद घ्यायची आहे. आणि ज्या खेळाडूंचा नंतर सामना असेल त्यांनी डगआउटच्या बाजूला थांबायचंय. डगआउट मध्ये कोणत्याही पुढच्या सामन्यातील खेळाडूने बसू नये याची कृपया नोंद घ्यायची आहे. मोहित चांगला बहरात येता येता मात्र या फ्लाइटेड डिलेवरती ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावर मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये एक मोठा हादरा महेश बाईडकर देतोय. एक टिचून मारा. आतापर्यंत केवळ 1 धाव 1 विकेट या षटकामध्ये 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. न्यू बॅटर मैदानात. यावेळी मात्र मोठा फटका, परत एकदा चेंडू सेफ हँड अमृत वेर्लेकर, बॅक टू बॅक विकेट. साइनेश बाद होतोय, गोल्डन डकचा शिकार होतोय. ऑन हॅट्रिक वरती येतोय तो महेश बाईडकर. काल एक हॅट्रिक आपण पाहिली या मैदानावरती. सागर मोरजकरने या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक नोंदवले. का या स्पर्धेतील दुसरी हॅट्रिक नोंदवण्याचा बहुमान महेश बाईडकर या ठिकाणी प्राप्त करतोय की नाही हे पाहणं गरजेचं. मात्र हॅट्रिक पेक्षाही संघाच्या विजयाला महत्व देणारा असा खेळाडू या मैदानावरती टिचून मारा करताना दिसतोय. मात्र अडचणीत सापडलाय तो म्हणजे अमेझिंग असोलनाचा संघ. 4 गडी या तंबूच्या दिशेने रवाना झालेत. त्यामध्ये 22 धावा मोहितच्या बॅट मधून आपल्याला निघताना दिसल्या. मात्र त्यानंतर बाद झालाय आणि आता मात्र थोडासा अडचणीत सापडलेला दिसतोय. ऑन हॅट्रिक वरती असेल महेश बाईडकर आणि न्यू बॅटर मैदानामध्ये जातोय तो म्हणजे विके. या ठिकाणी सिंगल आल्या हॅट्रिकची संधी हुकते. षटक संपतंय. 4थं अर्थात निम्म्या षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्येचा जर विचार केला धावसंख्या 29 धावा धावफलकावरती. दोन्ही संघाचा विचार केल्यास पहिल्या 4 षटकात 31 धावा होत्या साई गणेश संघाच्या. त्यापेक्षा 2 धावांनी पिछाडीवर आहे तो अमेझिंग असोला संघ. उरलेत अजूनही 24 चेंडू अर्थात 4 षटकांचा खेळ बाकी आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 43 धावांची आवश्यकता. 24 चेंडू आणि 43 धावा असं विजयाचं समीकरण. काय घडेल काय बिघडेल. एक बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक घेऊन जातो. परत एकदा इंग्लिश मध्ये विवरण देण्यासाठी आमंत्रित करूया सर हरीश काकोडकर यांना. धन्यवाद. So very good knock from Mohit of a 22, and that was the only big noted response from the batters of Amazing Assolana.
Other than that, Vicky Prajesh out on 3. Matin could not open his account, and so was Sainesh. But I think it's still not gone out of the hands. It's 10 runs per over required, which is not a difficult ask. And the ball must have gone older. They will have the batting power play as well. In comes Amrut Vellekar. They just walks in with that shot, a walking shot for a single. 42 runs required of 23. If you go by that calculations, I think 3 to 4 sixes are required to get them back on level terms, or maybe below 6 runs per over. And they very well have the capacity. They have still got the big batters left in their batting order. Right now is Navdeep and Vicky. Navdeep coming from Bali region of Kukole, and Vicky also from the same region, but both play for different panchayat and municipality. Heaving that, once again not middling the ball, just getting the single in the deep. And Amrut Vellekar, I've seen him bowling very well and mixes up very well. Just a good all-rounder. That's the reason the confidence the captain has to give him 2 overs. As is Mahesh Paidkar. Mahesh has already completed 2 overs, and what a performance that was. 3 wickets in his 2 overs. That is the reason why they are slightly on the top at the moment. The job is not fully done. Job is still left. Again, yeah, not getting it. A chance of a run out, and they might be thinking of the second. And Vicky first hesitated, then was thinking about it, and then says, let's not take a risk here. Settle down for a single. It's a close match. It's really close match. Well, some people might feel it's 10, 11 runs per over. In tennis ball cricket, it's just a matter of 3 balls. The situation can change altogether. And such matches we have witnessed in this tournament. Ujwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy All India level tournament has witnessed some of the finest innings, some of the greatest turnarounds. The sides sometimes losing sides turn their fortunes and won that matches. Going once again for the big one. No elevation this time, just a single. Fielding has been magnificent so far from Sai Ganesh side. One outstanding catch taken by Rupesh. And these are the small things. If you take your catches, half chances, when the score is not much, that always adds on to your calculations. Full toss ball, heaved away. There is a fielder, and it goes straight in his hands. There were so many open spaces. You could have put it anywhere, but he finds the fielder, and there goes the 5th wicket. Wicket departs. And that is one more wicket. Naresh Assolana just comes and walks back. No contribution for him, at least for the day. And that's not looking good here for the team managing Assolana. And it's amazing bowling here from Amrut Vellekar that continues. They are keeping up wickets and taking wickets in regular intervals. It's 33 for the loss of 6. Scorecard is going in only one direction. It's the wickets falling down.
So 5 was gone, and it's 33 for 6. And the batter is Navdeep trying to go for the slog sweep. Wants that ball in that same region. Nitesh, the bowler. So Nitesh starts off with a dot ball. Well, at this moment, certainly you can think of the favorism towards the bowling unit. They have done really well. But I guess with Nitesh coming into bowl, this is the first 6. I told you there might be a turnaround. Navdeep is still there on the wicket. There's a big worry here. You cannot bowl him over there. He can butcher you all day long. A 6 giving a little hope here for Amazing. So now, yes, once again, all eyes of Amazing Assolana supporters will be on this man, Navdeep. He can hit those big ones. He was little quiet in the first period where he played some dot balls, taken singles, watched the ball carefully. And now it's his turn. This is the 6th over. Goes for that. Once again, that is the same shot that he tried of the first ball. The first time that ball bounced a little bit more. This time the ball kept a little low. So instead of bowling the short balls, maybe there was a word from the keeper and also from Rupesh and other teammates of Nitesh to be bowling much fuller. Let him hit it straight rather than bowling it maybe behind the wickets square. That seems to be the idea here from the bowling side. Once again, might be a chance of a run out, but they scamper through for a single. Singles won't matter. Even if Nitesh considers himself that he gives 1-6, that will be job of very well done here by him in the 6th over. 40. .72 runs required. They are at 40s. That means 31 more runs required. Still. Uh, 32 more runs required, and if we consider this single, it will be 31 more runs required in 13 balls. It's exactly opposite. They need to bridge this gap as fast as possible. Well, they cannot allow it to increase and decrease it as fast. Maybe in the next over. 31 of 13. Ulta pulta here at the moment. He strikes well. He strikes well. Might be a catch. Well, that was also 100 rupees at stakes, but nobody takes 100 rupees. But enjoy the shot of Navdeep. So he has given them a little glimmer of hope. 25 more runs required to win in 12 balls. At the end of 6, the score is 47.
25 runs required of 12 balls. So it's just a matter of 3 sixes, or you can say it's just a matter of 2 sixes, and even if they run quickly and take a boundary as well, the job still will be done. Mayur was having an off day in the bowling. Can he have a better day in the batting department? And a very good all-rounder. They have kept 1 over just for that reason. Rohan Salgaonkar normally is up to the mark, bowls Yorkers consistently. This is struck nicely here. The fielder was inside and goes above his head. And Mayur Borkar strikes a big blow in this over. This is the batting power play over, and this is going to change the entire scenario. This was right in the slot, and he gave it a full go. Once again, he's missing the line. This might be catch. Oh, good fielding. Very good fielding effort. They are thinking of the second run. This might be a run out. Oh, everything happening on this ground. Everything happening. Magnificent fielding effort. Lifting himself up in the air. Acrobatic save here. Saved 5 runs. Mahesh Bhaidkar, Khorgaon Express. Well, leaping like a kangaroo over there. Score with this run moves on to 54. So again, nicely played, but there is a man in the deep. Takes the score to 55. So 17 more runs required of 9 balls. 17 of 9 is the equation. It's just a matter of 1-6. This time it was in the slot, but slightly outside. Slightly outside. Went for the big heave. Well, I think they need to go in this over as the power play overs are on. This is the 7th over. And they have kept it to 1 over for Rohan, but Rohan has been a hit for 1-6. Rohan has to see that last 2 balls are good ones. This time he played it very well. Lower full toss ball, but can get a single at the most. Rupesh comes quickly from the boundary rope and restrict them to a single, taking the score to 56. 16 runs required of 7. Well, 6 will make it more interesting. Or even a boundary will make it more interesting. Navdeep, so far, looking very strong. Oh, he hits it well. He times it well. It goes above his head. Yes, it does. Well, this was a 6 that was badly required. An amazing shot coming from an amazing person for amazing Assolana at the right time. And that will finish over number 7. And it takes the score to 62. So 10 runs required of the last over. That 6 made it a little better here for amazing Assolana. There's 10 more runs required. Who's going to bowl? Oh, Mr. Sixer. Rajesh Wainerkar, who is not famous for his heroics in the bowling department, but he has to do the job of defending 10 runs. Can he do? And it's against Mayur Borkar and Navdeep. What a great innings from Navdeep. 3 sixes at a time. They were desperate. And the desperations comes out handy. Hits big ones. Crucial phase that was. Now just 10. In 10 in tennis ball cricket, I think
Oh, he bowls a short ball. Look at the shot. Just like how Mayur bowled it to Rajesh Wangankar. Rajesh also reciprocating the same short ball, slow ball to him. Went for the switch hit. The ball did not arrive. The ball came so slow. It was ages. He waited, and finally it came after a long time. It's now the next ball. 9 runs required. Well, the first ball definitely not with the pace. Bowling slower balls here. Mixing it up very well. Rajesh Wangankar mixed the sixer. Tough job of defending 9 in 5. That's a good shot. Very nicely played in the covers. No chance for the fielder in the covers. This is a magnificent back foot cover drive. A great punch here. Sensible, calculative Navdeep. Yes. Now, 5 runs required of 4. There are lots of open spaces here where Navdeep is going to take it here. What an innings this is. Very calculative, very destructive as well sometimes. He finishes off in style. Navdeep finishes off in style. Magnificent innings. Outstanding, brilliant from Navdeep. Well, this is the kind of innings that will lift any team up. They felt down and out when 6 wickets were down. Top order did not contribute at all. And finally, the rescue job was done by Navdeep. Definitely will be the contender for the player of the match in this game. And he plays an outstanding note that takes